Hi friends, we are going to learn today what is the rate of heat transfer through composite wall. आपको मालूम है? Okay, I will first tell you some uh, what we can say the basic concept regarding this. आपको मालूम है the according to Fourier's law, okay, rate of heat transfer is directly proportional to the area perpendicular to the heat flow. Okay, you can consider this is the wall, okay, having thickness dx or length. Okay, this is the thickness or length. ये क्या है उसकी thickness है. तो आपको मालूम है कि what is known to you according to Fourier's law, rate of heat transfer is directly proportional to q equals to minus k into a dt by dx. ओके, ये आपको मालूम है. वेयर एज dt by dx इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, dt इज नथिंग बट टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय dx इज नथिंग बट लेंथ और thickness of this wall. Dear friends, okay, you can consider this is the T1 temperature. Okay, this point temperature is T1 and this is the temperature fall at point 2, the temperature is T2. Okay, and we will give in this way, you know, the temperature difference is final temperature minus initial temperature. Okay, so q equals to minus k into a, here T2 minus T1 divided by dx is nothing but length or thickness of that wall, length or thickness of that wall आपको मालूम है. So dear friends, if you are multiplying by this minus sign to this bracket, what will become आपको मालूम है. Okay, q equals to ओके के इंटू ए, आपने क्या कर दिया, इस माइनस साइन से इधर मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट को, तो क्या होगा दिस T2, ओके, माइनस इंटू T2 इज माइनस T2, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, दैट इज T1 डिवाइडेड बाय लेंथ L. डियर फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि आप क्या करते कभी भी, अपन क्या करते हैं, जो प्लस साइन हो पहले लिखते. सो from this q will become q equals to k into a T1 minus T2 by length or thickness. Okay, this is the required, okay, equation for heat transfer through a single wall. Okay, through a single wall, and that has, this equation has given by Fourier's law of heat transfer. Okay, Fourier ने वो क्या equation अपन को दिया. So this is for single wall. Now we are interested to learn the heat transfer through a composite walls. Okay, or as name indicates, dear friends, I am interested to draw one diagram for composite wall, and it is like this. You know, this is the wall. Okay, this is the composite wall. This is the first wall, this is the second wall. Okay, consider this is made up of copper. Okay, or you can consider, we will say this is made up of material A. ये material से बनी है this wall, A wall B material से बनी है, this C wall has become from this C material. Okay, for a consideration. Okay, द मटेरियल इज डिफरेंट. यदि मटेरियल डिफरेंट है तो अपन क्या कंसिडर करते हैं, उसका थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द थ्री मटेरियल इज डिफरेंट एंड थर्मल कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय के. ओके, एंड वी विल राइट हियर द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दिस फर्स्ट वॉल इज के, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दिस सेकंड वॉल इज के बी, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दिस थर्ड वॉल इज के सी. ओके, एंड all the three materials having different length, then we can write here, what we can write here, we can write here, okay, this is the length of wall A, this is the length of wall B, this is the length of wall C. Okay, we have to consider this figure. Dear friends, आपको मालूम है ये K is thermal conductivity और L for length of all these three materials. आपको मालूम है, क्या मालूम है, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द कंपोजिट वॉल. ओके, इनिशियल टेम्परेचर, ओके, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर Q, इनिशियल टेम्परेचर T1 है, उसमें से क्या हो रहा
आपकी वॉल जारी, यहाँ क्या होगा T2 टेम्परेचर होगा। ओके, यहाँ से देर इज ऑल्सो heat transfer takes place। okay, T2, this is your T3 point, and after that there is also a certain fall, and that your temperature is your T4 temperature। okay dear friends, okay, there is a temperature fall। okay, you can observe here। okay, so आपको मालूम है वेन एवर देर इज इलेक्ट्रिक फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट का जब भी फ्लो होता और हीट ट्रांसफर जब होती, देर इज रेजिस्टेंस। ओके, व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज नथिंग बट अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ हीट। ओके, सो रेजिस्टेंस will be there here, rate of heat transfer Q will be here। okay, and at this point here will be your T1, and इधर क्या होगा, for this particular wall there will be a resistance। okay, this is your T2 point, and this resistance is RTH। okay, thermal resistance। okay, and that will be given by length of this wall, L divided by LA divided by KA into A। okay, देन आफ्टर जब T2 to T3 जब हीट फ्लो होंगी, उसमें भी क्या होगा तुम्हारा, रेजिस्टेंस विल बी देयर। ओके, while flowing from T2 to T3 there is a resistance। okay, this is your T3, and this resistance equals to RTH। okay, thermal resistance equals to क्या होगा, this L of B divided by KB into A। okay, KB into A, and while moving from this T3 to T4, okay, there is also a resistance। okay, and this resistance will be given by RTH। okay, for C। okay, C material A, this is for B material, this is for material A, और wall A, wall B, wall C। okay, for C क्या होगा, LC divided by KC into A। okay, ये क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। wherever there will be a flow of electric current or flow of heat from one place to another place, there will be a resistance। what is resistance? Resistance is nothing but opposition to the flow of heat। okay, so you know this, dear friends। so rate of heat transfer per unit time will be equal in this wall is equals to rate of heat transfer per unit time from this wall, and that is equals to rate of heat transfer per unit time through this wall, and rate of heat transfer will be given by Q equals to। okay, आपको मालूम है। okay, for a single wall we have find out that Q equals to K into A T1 minus T2 divided by EL। okay, for a plain wall, and we are the same formula will be applied here for the wall first, that is wall A। we'll use here that K A into A T1 minus T2 divided by LA। dear friends, we are using that same formula। अपन क्या कर रहे हो, सेम फार्मूला। ओके, ओके, बाय अपर फूरियर्स लॉ ने जो दिया है वो सेम फार्मूला अपन यूज कर रहे हैं इधर। ओके, सो एंड पर यूनिट टाइम, ओके, that is equals to rate of heat transfer through this wall B per unit time, rate of heat transfer per unit time through this wall B, and that will be given by थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी बी वॉल की, KB इंटू एरिया इंटू T2 minus T3, T2 minus T3 divided by LB।
Okay, this is the rate of heat transfer through the second wall. Rate of heat transfer through this rate of heat transfer per unit time through wall C is given by Kc into area into T3 minus T4 divided by LC. Okay, this is the rate of heat transfer through wall A per unit time. This is the rate of heat transfer through wall B per unit time. This is the rate of heat transfer through wall C per unit time. Dear friends, we are interested to find out the temperature difference. Okay, T1 minus T2 equals to क्या होगा? So from this equation T1 minus T2 will become, okay, T1 minus T2 equals to, आपको मालूम है ये इधर डिनोमिनेटर में इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा. सो Q डिवाइडेड बाय एल ए डिवाइडेड बाय, और ये इधर न्यूमरेटर में है और मल्टीप्लाई में है, वो क्या होगा, इधर जाके डिवाइडेड में होगा. दैट इज के ए इंटू ए. ओके, दिस इज द योर फर्स्ट इक्वेशन. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. सो अपन क्या करेंगे माइनस टी, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट टेम्परेचर डिफरेंस. दैट इज T2 माइनस T3. T2 माइनस T3 इक्वल्स टू, फ्रेंड्स ये इधर डिनोमिनेटर में है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा Q इंटू एल बी डिवाइडेड बाय, ये इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड में होगा. सो के बी इंटू ए. दिस इज योर रिक्वायर्ड सेकंड इक्वेशन. डियर फ्रेंड्स, यू नो, क्या मालूम है आपको, T3 माइनस T4 आपको मालूम है. Okay, we are interested to find out the temperature difference. T3 minus T4 equals to, ये इधर डिनोमिनेटर में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा Q डिवाइडेड बाय Q इंटू एल सी. ओके, ये इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, और न्यूमरेटर में ये जाके इधर क्या होगा, डिनोमिनेटर में जाएगा. दैट इज के सी इंटू ए. दिस इज योर रिक्वायर्ड थर्ड इक्वेशन. डियर फ्रेंड्स, by adding equation first, second and third, we'll obtain one new equation, and that is by adding equation first, second and third. ओके, तीनों इक्वेशन ऐड करने के बाद अपन को क्या मिलेगा, ऐड कर दो सिंपली. लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दो, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड ऐड कर दो. सो व्हाट विल बिकम, T1 माइनस T2, इसमें ए ऐड करने का है, प्लस T2 माइनस T3, इसमें ए ऐड करने का है, प्लस T3 माइनस T4. लेफ्ट हैंड साइड जैसे ऐड किए वैसा ही सेम क्या करने का, राइट हैंड साइड करने का. डियर फ्रेंड्स, यू शुड नो द Q इज कॉमन हियर इन ऑल द थ्री इक्वेशन. Q क्या है, कॉमन है. सो वी विल फाइंड आउट Q एज अ कॉमन. ओके, Q क्या कर देंगे, तीनों इक्वेशन में, इक्वेशन से अपन कॉमन निकाल देंगे. सो व्हाट विल बी रिमेन, Q. व्हाई वी हैव फाइंड आउट Q outside the bracket, because we are interested to find out rate of heat transfer through this all composite wall. ये composite wall में कितना heat transfer हो रहा, वही तो अपन का purpose है. We have to find out that thing. That's why we have find out here Q outside the bracket. What is the remaining thing for in first equation, that is right hand side of first equation is LA into KA divided by A. LA divided by KA into A plus Q आउटसाइड द ब्रैकेट निकाल दिया इधर, तो क्या बचा, एल बी डिवाइडेड बाय के बी इंटू ए. एल बी डिवाइडेड बाय के बी इंटू ए प्लस Q आउटसाइड द ब्रैकेट निकाल दिया, तो एल सी डिवाइडेड बाय के सी इंटू ए. ओके, सो आई हैव टोल्ड यू जस्ट बिफोर फ्यू सेकंड. ओके, दिस minus T2 plus T2 get cancelled, minus T3 plus T3
get cancelled. What has remained, and the remaining thing is T1 minus T4. What is T1 minus T4? That is initial temperature, and this is your final temperature. That is nothing but temperature difference. Okay, T1 minus T4 equals to what we have obtained, that is Q into same bracket as it is LA divided by KA into A plus LB divided by sorry, LB divided by KB into A plus LC divided by KC into A. Dear friends, we are interested to find out rate of heat transfer through composite wall, that is Q equals to, okay, this is here in multiplication. ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, Q से मल्टीप्लिकेशन में है. So that goes here while changing the साइड चेंज करते समय क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में होगा, ये इधर डिवाइड में आएगा. So T1 minus T4 divided by whole bracket as it is, that is LA divided by KA into A plus LB divided by KB into A plus LC divided by KC into A. Okay, and this is the required equation. This is the required equation for a heat transfer through a composite wall. Okay, different material की बनी है this wall. Okay, all the walls are made up of different materials. different material से बनी है तो क्या thermal conductivity भी different है. So material length will be same or different. Okay, so we have taken here different lengths LA, LB and LC. So dear friends, we have to find out. Okay, we have find out it for this is the rate of heat transfer for this 1 to 3 walls. Okay, we have, and we have to consider, okay, the one assumption is there. Okay, there is perfect contact between this wall A and B. Okay, A and B में क्या है, perfect contact है. Okay, there is no space for there is no air gap नहीं है उधर, that is perfect contact. Okay, we have to assume that thing. And if and we have observed here, okay, आपको इसमें से clearly understand हो रहा होगा कि LA divided by KA into A is your LA divided by KA into A is your thermal resistance for this wall A. LB divided by KB into A is your thermal resistance for this wall B, and LC divided by KC into A is your thermal resistance for wall C. So we can write this equation like as, that is nothing but, okay, आप इसको ऐसा भी लिख सकते T1, okay, you can write that equation like as T1 minus T4, okay, Q rate of heat transfer through composite wall Q equals to, आप क्या लिख सकते, इसको मैं थोड़ा ऐसा I will make here a square bracket. Okay, that is Q equals to, okay, this is the thermal resistance for wall A plus thermal resistance for wall B plus thermal resistance for wall C. Okay, this is your required desired equation. But dear friends, if we have used here 3 walls, okay, in a composite manner, if you have used n number of walls, that time your equation will become for n number of walls, for n number of walls has used, then your required equation for that, okay, composite wall rate of heat transfer for n number of composite walls will be become like as summation 1 to n. Okay, that is T1 minus Tn plus 1
okay, divided by L divided by K into A। डियर फ्रेंड्स, ये आपको मालूम होगा क्या, यू हैव यूज्ड एन नंबर ऑफ वॉल्स, में बोले तो डिफरेंट वॉल्स है, वो एन विल बी 10, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 हो। इफ दिस इज you want to make a equation for 10 walls in a composite manner, okay, ऐसे इधर अपने 3 यूज किए थे, ऐसे 10 walls बनाए, ओके ओके, बट देयर इज अ परफेक्ट कॉन्टैक्ट, ओके, देयर इज नो एयर गैप, 10 वॉल बनाए तो अपन इस सिंपल इक्वेशन से वी कैन यूज हियर Q10, okay, rate of heat transfer through that Q10 number of walls, that is T1 minus T11, n plus 1 है ना, T11 divided by L1 divided by K1 into A, L2 divided by K2 into A, divided as L10 divided by K10 into A. Okay, in this way we can find out the required desired equation for rate of heat transfer through a composite wall. So आपको याद रखना है, this equation is too much important, okay, T1 minus T4, so LA divided by KA into A, and this LA divided by KA into A is nothing but thermal resistance for wall A, this LB divided by KB into A is thermal resistance for wall B, this LC divided by KC into A, okay, LC divided by KC into A is nothing but your thermal resistance for wall C, okay, we have used here, अपने इधर सिस्टमेटिकली इन सिस्टमेटिक वे अपने बना दिया, फॉर एन नंबर ऑफ वॉल सुधा अपने इधर इक्वेशन बनाई, दैट इज T1 माइनस TN प्लस 1, ओके, इधर अपन 3 कंपोजिट वॉल बनाए थे तो क्या T4 आया था फाइनल में। सो इन दिस वे विल राइट हियर फॉर n number of walls Q of n equals to summation of 1 to n T1 minus TN plus 1 divided by L divided by K into A, okay, understood? I hope you have understood this heat transfer through a composite walls. Thank you.